Hello everyone, hello, how are you? Good evening. I hope you all are doing good. कैसे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं? तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर है उसका नाम है लाइट। तो देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन ऑनलाइन है। लेट मी जस्ट चेक हु अमंग्स्ट यू आर ऑनलाइन। ओके, काफी लोग ऑलरेडी ऑनलाइन आ चुके हैं, but I'm not able to see the live chat. Just give me a moment. Okay, so there are a lot of people who are here. Haripriya is saying hi. Ravinder is saying hi. Hi, hello everyone. Hello Shriya. Hello Sneha. Hello Asmita. Mohammad Yasir is saying I am Mariam. Okay, hi Mariam. Ardhana is saying hi. Rudra is saying hi. काफी लोगों ने hi बोला है आज तो. Hello, hello, hello. अयान ने अस्सलाम वालेकुम बोला. वालेकुम अस्सलाम. यादव इज सेइंग गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए, काफी ज्यादा लोग हो गए, दे आर ऑलरेडी 40 पीपल। मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, तो जल्दी मैंने जिसको देखा है। तो हेलो टू एवरीवन, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और जो लोग पूछ रहे हैं उनके लिए इवन आई एम डूइंग वेल। सो लेट अस स्टार्ट टुडेस चैप्टर शुरू करने से पहले आई गिव यू अ वेरी स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट myself. चैप्टर का इंट्रोडक्शन उसके बाद में। सो माई नेम इज मोहम्मद अल खालिद। अगर आपको अभी तक याद नहीं हो गया है तो अभी याद कर लीजिए, बिकॉज मैं आपके फिजिक्स के सारे क्लासेस ले रहा हूं। आई एम मोहम्मद अल खालिद। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT गुवाहाटी। जी हाँ, और मैं आपके सारे फिजिक्स के क्लासेस लूंगा, और मैं सिर्फ क्लास नहीं लूंगा। इन ईच एंड एवरी सिंगल क्लास आई ट्राई टू डू एज मेनी एक्सपेरिमेंट्स एज पॉसिबल। जितने एक्सपेरिमेंट्स करवा सकता हूं आई do them, because I know that you people love experiments. आप सबको एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद है, और मुझे भी एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत पसंद है। मुझे स्टोरी सुनाना बहुत पसंद है। आज पता है 6th क्लास का शायद मैंने मैग्नेटिक्स वाला सब्जेक्ट लिया था, उनको मैंने इतना लंबा सा एक स्टोरी सुनाया। तो प्रॉब्ली आप लोगों को भी किसी दिन किसी क्लास में मैं स्टोरी सुनाऊंगा। तो एक्सपेरिमेंट्स, स्टोरीज, these are two things which I like, and of course physics. I love physics and I will make you people love physics, because physics is something which is there all around us. And here at Unacademy, which is the largest online learning platform in India, I will be teaching you physics. तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो go and like the video and subscribe to this channel now, and then I will start the subject. Cool? Go and like this video, subscribe to this channel. And you know what? You should go and call your friends as well. अपने फ्रेंड्स को भी बुलाओ। तो आज हम पढ़ेंगे in this chapter. First of all, if you remember, in the 6th class we had a similar chapter. I think lights and reflections के नाम से था। तो we will do a very small mini recap कि हमने लास्ट ईयर क्या पढ़ा था। छोटा सा मैं आपको याद दिला दूंगा। तो और if you want to go in more detail, you can go to Unacademy Class 6th channel and watch the video over there, because yesterday I took them this video about light and reflection and they really liked it. Then after that we are going to study how light is travels along a line. Then we will have a look at reflections. Reflections क्या होते हैं? We will see that. After that we are going to see what is an image. Image किसे बोलते हैं? Cool. उसके बाद में we'll see a few interesting things with mirrors, and after that, yes, we have a Menti quiz today. So we are actually not covering the entire chapter in this video. This is only the half part of the chapter. Second part I will take tomorrow, and we'll complete the rest of the chapter tomorrow, because the chapter is a bit big. Cool? Okay, मेरा live chat फिर से काम नहीं कर रहा है, तो let me just see if it is working now. I'm not able to see you. Okay, cool. Hi Kirtanam, hello Pia. तो अभी हम शुरू करते हैं। Let us start. So first of all, I will give you a recap. I will give you a quick recap. तो light is a form of energy which enables us to see things around us. Light क्या है? Light एक एनर्जी है, ओके? जैसा हीट एनर्जी होती है ना, वैसे ही light is also an energy which makes things visible. जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास है वो विजिबल होते हैं लाइट की वजह से। अगर लाइट नहीं होगी तो हमें दिखाई देगा क्या? दिखाई देगा? नहीं देगा ना। अगर मैं इस रूम के सारे लाइट्स बंद कर दूं तो विल यू बी एबल टू सी मी? आप मुझे देख पाओगे? अगर मैं लाइट्स बंद कर दूंगा तो नहीं देख पाओगे। तो दैट इज व्हाई
लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से हम आसपास की चीजों को देख सकते हैं. इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस. इट इज द एनर्जी विच मेक्स थिंग्स विजिबल. ओके, अंडरस्टूड. इसके बाद में देयर आर लाइक टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू लाइट. ठीक है, देयर आर ऑब्जेक्ट्स जिनमें से लाइट निकलती है, जैसा कि सन है. आप धूप में बाहर जाओगे तो आपको सूरज की लाइट आएगी, या आप रूम के अंदर बैठे होगे तो आपको बल्ब से या ट्यूबलाइट की लाइट आएगी. अगर आपके पास स्मार्टफोन है, देखो मेरे पास एक फोन है या कोई भी फोन है, तो फोन की स्क्रीन में से भी लाइट आएगी. राइट, सी मेरे फोन में से लाइट आ रही है, यू कैन सी दैट. और या फिर आपके पास टॉर्च है, सी देयर इज अ टॉर्च हियर, तो टॉर्च में से आप देख सकते हो कि लाइट आ रही है. सो व्हाट डज दैट मीन? ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स गिव आउट लाइट. इसमें से लाइट निकलती है बाहर. इट दे एमिट लाइट. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? दीज ऑब्जेक्ट्स एमिट लाइट. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. क्या बोलेंगे इनको? वी कॉल देम लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. सी, इसको हम बोलेंगे लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. मैंने स्क्रीन पे इसका डेफिनेशन आपको दिया हुआ है. ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. हियर यू कैन सी एग्जांपल में देयर इज अ टॉर्च, देयर इज सन. ये सारे एग्जांपल्स आपको पता है बिकॉज़ यू हैव स्टडीड दिस ऑलरेडी इन 6th स्टैंडर्ड. ठीक है. नाउ द सेकंड थिंग इज द वेरी वेरी ऑपोजिट ऑफ दिस. क्या है भाई इसका ऑपोजिट? इसका ऑपोजिट है ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट एमिट लाइट. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसमें से लाइट नहीं आती. जैसा कि कौन? जैसा कि मैं, मेरे अंदर से लाइट निकल रही है क्या? नहीं निकल रही. मेरे हाथ में पेन है, ये पेन में से लाइट आ रही है? पेन में से भी लाइट नहीं आ रही है. मेरे हाथ में देखो, आई हैव दिस स्केल. मेरे हाथ में स्केल है, ये स्केल में से लाइट आ रही है? नहीं आ रही है. मेरे पास और क्या है? आई हैव वाटर बॉटल. वाटर बॉटल में से लाइट आ रही है क्या? नहीं आ रही है. इवन सो ये जितनी सारी चीजें हैं ना, इनमें से लाइट नहीं आ रही. सो दीज आर ऑपोजिट ऑफ लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. तो हम इसको क्या बोलेंगे? वी विल कॉल दीज थिंग्स नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, लुमिनस का ऑपोजिट नॉन लुमिनस. ओके, यस. तो ये आपको क्लियर हो गया. अगर आपको ये समझ में आ गया तो जस्ट टाइप इन. ये रिकैप था. नाउ वी विल स्टार्ट टुडेस क्लास. तो इफ दिस इज क्लियर टू यू, वी कैन मूव अहेड विद आवर करंट क्लास. तो आप कमेंट करके मुझे बताओ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. कूल. कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो जस्ट कमेंट के सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. जस्ट राइट क्लियर क्लियर क्लियर. अगर ज्यादा क्लियर हो गया तो राइट क्रिस्टल क्लियर. आई विल रीड इट. ओके ओके. नीरजा ने ऑलरेडी लिख दिया क्रिस्टल क्लियर है. वेरी नाइस. तो अभी हम लोग क्या करेंगे? विल क्विकली मूव टू द नेक्स्ट थिंग विच इज, कैन यू सी दिस? कैन यू सी? आपको यहां पे दिख रहा है कि ये जो लाइट हाउस है, सी दिस इज अ लाइट हाउस. आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट. आई विल जस्ट ड्रॉ ऑन टॉप ऑफ इट इफ इट इज नॉट वेरी क्लियर टू यू. ओके, आप लोग को लाइट हाउस पता है ना सबको? दिस इज अ लाइट हाउस. ठीक है, लाइट हाउस क्या करता है? लाइट हाउस शोज द वे टू शिप्स. जो समंदर में रात में जब शिप्स जाते हैं ना, तो उनको रास्ता कौन बताता है? लाइट हाउस बताता है. सो यू कैन सी कि लाइट हाउस में से है ना एक लाइट की बीम निकल रही है. स्ट्रेट लाइन में है ना, ऐसा एक लाइट में लाइट निकल रही है. ठीक है. सिमिलरली ऑन द राइट साइड आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ है. सी, यहाँ पे देयर इज वन बॉय सिटिंग, देयर इज वन मैन सिटिंग ओवर हियर. और उसके फेस पे से एक लाइट जा रही है. इट्स गोइंग इन अ लाइन लाइक दिस. तो शायद वो लाइट एक पतले सुराख में से आ रही हो, ऐसे ऐसे. ठीक है, इवन इफ आई ब्लॉक द लाइट लाइक दिस, मेरे फेस पे भी एक पतले सुराख में से लाइट आएगी. राइट. So what is happening is there is a beam of light coming from the lighthouse. Lighthouse, you can see a beam of light. Similarly, on the right side, there is a guy sitting and there is another beam of light coming on his face. So इससे what do we understand from this? इससे हमें पता चलता है कि लाइट एक बीम के शेप में आती है. लाइट goes in a beam, goes straight. So we'll do a very small experiment here. Let's see if you can see this. What I'm doing is basically just give me one moment.
See, I made myself bigger. अभी मैं बड़ा हो गया हूँ because we are going to do an experiment from this camera. So I have a mobile phone over here. ठीक है, I have a mobile phone और उसपे से torch है. Can you see this light? Can you see the torch? You can see the torch, right? Can you or can you not? Wait, I'll make this a bit more easier for you. ठीक है, अभी I think you can see this properly. Can you see the light? हाँ, तो अभी आपको लाइट दिखाई दे रही है which is coming from my torch. तो अभी देखो I have a pipe. ठीक है, ये पाइप है, पाइप में से होल है, I can blow through it. तो अभी मैं क्या करूंगा, I will try to keep this pipe straight and I will try to shine some light from this end. ठीक है, यहां पे देखो I am just putting a torch on this end and let us see if you can see the light on the other end. See, अभी ये straight है. Can you see the light through it? लाइट आपको दिखाई दे रहा है ना? ये पाइप में से मैंने लाइट पास किया and you were able to see it. Now we'll just bend the light a little bit. ठीक है, हम लाइट को क्या करेंगे? We will bend the light. Again, I am keeping it on the top here, but this time, see the light के ऊपर मैंने इसको पाइप तो लगा दिया. Can you see? Can you see the light? Can you see? पाइप के अंदर देखो, पाइप के अंदर देखो. Can you see the light? Can you see the light in the pipe? Can you see? No, you cannot see because this time the pipe is bent. इसका मतलब क्या हुआ कि जब पाइप ऐसे था, बिल्कुल स्ट्रेट था, तो आपने लाइट ये एंड से मैंने डाला तो ये दूसरे एंड से आपको दिखाई दिया. बट अभी जबकि मैंने पाइप को ऐसे बेंड कर दिया, when I was putting light from this end, you were not able to see from here. Now what does that mean by इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. जब ये स्ट्रेट होगा तो लाइट इसमें से आपको दूसरे एंड में दिखेगी. बट व्हेन इट इज बेंट, लाइक स्ट्रेट में गया, when it is straight the light passes through it, you can see it on the other end. But when this is bent, the light cannot go through this and you are not able to see it. This proves only one thing, and that one thing is, yeah, so now again I am back in the corner. We understood that light travels along a straight line. ठीक है, we already knew this, but I just wanted to show it to you and prove it to you once. Is that clear now? Yes, all of you got it. Everyone was typing. This means light travels in a straight line. Very enthusiastic people you are. So I like enthusiastic people actually. So now the second thing which we are going to do now is we are going to have a look at reflection of light. So as I told you, I studied in IIT Guwahati. And this is a picture which I took in IIT Guwahati. See, this was my auditorium. This is the admin building. This was my library. Anyway, so you can see there are 3 buildings in this picture. Yes or no? You can see the 3 buildings, right? But along with the pictures of the 3 buildings, there is water over here. Underneath there is water. And what is happening in the water? You can see the reflection of the building, right? You can see the reflection here. ये वाली बिल्डिंग का रिफ्लेक्शन यहाँ पे नजर आएगा और इस बिल्डिंग का रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे नजर आएगा. Are you able to see the reflection of the 3 buildings in water? Yes, you are able to see. Nice, nice. If you are seeing them, I will give you another thing. Vicky is asking, sir, is there a Menti? Yes, there is a Menti. ये मैं आपको आधा चैप्टर पढ़ा के उसके बाद मैं Menti लेने वाला हूँ आज. I will show you another example. See, this time it's a close-up. This is a lotus. And you can see कि यहाँ पे water is very smooth. ठीक है, ये पुराने पिक्चर में there were a lot of waves, right? इसमें बहुत ज़्यादा waves थे, ऐसे waves आ रहे हैं पानी में. You can see there is a wave over here as well. यहाँ पे भी wave है. But this time the water is very smooth. ठीक है? It almost looks like a mirror. Yeah. Does it look like a mirror or not? It looks like a mirror. So you can see that there is the reflection of the lotus in water. आपको पानी में लोटस उल्टा दिखाई दे रहा है. दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा है? You can see the real lotus. See, this is the real lotus. ठीक है? And this one is the reflection. ये वाला reflection है लोटस का.
So why is the reflection coming in water? मैंने आपको बोला था कि light travels in straight line. तो अभी मैं आपको बोलूंगा कि जब straight line में light जाती है ना, whenever it hits something, some surface which is shiny, it bounces. जैसा कि आप जब बॉल फेंकते हो तो बॉल बाउंस करता है ना. इफ यू टेक अ बॉल एंड थ्रो इट एट द वॉल, अगर आप दीवार पे बॉल को लेके मारोगे तो द बॉल बाउंसेस. यस और नो? द बॉल बाउंसेस, राइट? वैसे ही सिमिलरली when light hits a surface which is flat, which is clean, which is smooth, or it is polished, the light also reflects. So what is happening here is the light from the lotus is coming and hitting the water, and then it is reflecting and we can see it. I think the color of the pen is not nice. I will change it. I'll make it red. So अभी देखो यहाँ से ना light coming from here, it's hitting water over here. Cool. And then from there it is reflecting. So that is how we are able to see this. So ऐसा there are like millions of straight lines of light coming. It's hitting the lotus first. Lotus को लग के पानी में जा रहे हैं. पानी में लग के they are coming back to us, and we are able to see the reflection along with the lotus. इसको I'll do one thing. I will do an experiment now, and I will show it to you. How does this happen? So I have a mirror over here. Can you see? I have a mirror. Mirror दिखाई दे रहा है ना सबको? So I will put this mirror and I will attach my secondary camera. I'll put one more camera and I will show you the experiment. Cool? Wait, let me just put the camera once. Okay, so अभी मैंने कैमरा लगा दिया है. Let us see if you people can see the camera. Yes, you people are able to see the camera. ठीक है, आप लोगों को कैमरा नजर आ रहा है. You can see the mirror as well, right? Should I say hi in the mirror? Should I show my face in the mirror? Yes, you can see me in the mirror. Hi, hello everyone. Hello mirror. So there are two of me because of the mirror, because there is a lot of reflection happening in the mirror. I think I'll just clean this once. I'll clean the mirror and keep it here. Okay. So now what we are going to do is we are going to do a small experiment. I told you that light beam, I showed you a light beam, right? You saw that the light beams were also traveling in straight line. जो lighthouse से निकल के there was a light beam, it was going in a straight line, right? वैसे ही I am going to create a beam. How am I going to create a beam? Oh, तो अब तक का clear है ना आपको? तो I will just show it practically once. How am I going to show it practically is, see, I have a piece of paper. Cool, it's a thick piece of paper, it blocks light. Another thing which I have here is, I'll take a scissor. I'm going to take a scissor and I am going to cut this piece of paper. ठीक है? You can see this is straight. I am going to cut it. Wait, I'll just cut it only. Someone is saying that this was taught in class 6. It's good. आपका recap हो जाएगा, but this is part of class 7 syllabus, okay? So I'm going to teach it anyway. Now you can see that there is a slit, right? इसके बीच में एक छेद हो गया है. There is a slit in this paper. And when I shine, Vishu is saying, call me Vishu late. Okay. Suraj Ahlawat. I do not know what that means. So what I am doing is, मेरे पास अभी एक और torch है. You can see this. So I am going to put this torch over here. See, you can see that I have a torch which I am keeping here. I'll just keep it here. I'll take support of this lock and keep it here. And this piece of cardboard, I'm keeping it here. Cool. So you can see that when I keep the light like this,
there is a beam of light coming through this, right? Can you see a beam of light coming through this? You can see a beam of light, right? You can see, yes, you can see it. Great. So I'll just prop this in. I'll keep this slit over here. अभी मैं slit पे से I'll just turn the slit like this. अभी मैंने जब slit रखा है, तो just see कि इसमें से जब beam of light आ रही है, there is a beam of light coming through this. Yes, can you see the beam of light? इसमें से ऐसा निकल के आ रही है ना? You can see that there is a beam of light which is coming through the slit. ये slit है, यहाँ से एक torch डाली है मैंने, and there is a light beam coming. Now see, when I move the light like this, the beam of the light also moves. जब ये मैं light को यहाँ से थोड़ा change कर रहा हूँ तो वो beam भी हिल रही है. और when I move it like this, जब वो mirror को hit कर रही है light, it starts reflecting. Can you see it's reflecting? आप देख रहे हो ना, it's reflecting. See, the beam of light came. यहां से ऐसा beam of light आया. It touched the mirror and it went in the opposite direction. आपको क्या पता चला? When light hits a shiny surface, clean and shiny surface, it bounces, it reflects, okay? And this is what we call as reflection. Understood? Clear है ये? Did you understand what reflection is now? Is this understandable? अगर ये सबको समझ आ गया, तो then I will move on to the next topic. Just let me know if it is clear. Tell me if it is clear. Just type clear है. अगर आपको clear और हो गया है तो type crystal clear. It should be as clear as a crystal. But today you can do one thing. You can write mirror clear. It should be as clean as a mirror. Okay? Yep. Satish is saying that bouncing light is called reflection. Yep, that is absolutely true. ठीक है, तो सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया. क्लू नाइस. ठीक है, तो इकबाल को भी, यूसुफ को भी क्लियर हो गया, निकुंज को भी हो गया, स्नेहा को भी हो गया, माहिमा को भी क्लियर हो गया. नाइस. तो अभी वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. फिर वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस फास्ट सो दैट वी कैन डू द मेंटी क्विज इन द एंड. तो मैंने जैसा बोला था, डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंजेस. जैसे ही मिरर को हिट किया, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया ना. इट वेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. So what is this called? When the direction of light changes. When it hits a shiny surface, the direction of light changes, and this is known as reflection. अगर कोई surface shiny है या polished है, तो उस पर अगर light hit करती है, तो वो reflect हो जाता है. हम mirrors उसी को बोलते हैं. See, I have a mirror here. Mirror को आप कैसे पता चलता है कि this is a mirror? Because it's very shiny. ठीक है? It's a shiny surface. That is why it's called a mirror. Cool? So any polished surface or any shining surface acts like a mirror. जैसा मैंने आपको लेक बताया था, लेक में आपने लोटस को देखा, कैसे दिखा आपको वो? You were able to see it because the surface, water was very clean, water was very shiny at that time. That's why you saw the reflection. अभी we are going to do something cool. अभी एक और चीज करते हैं हम लोग. I'll start the camera again. Just give me a moment. Okay, I'm starting my camera again. I'm going to make the camera a little bit bigger, okay? So what do you see? आपको क्या दिखाई दे रहा है अभी? Tell me what are you able to see? Just type in.
ठीक है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? यू आर एबल टू सी अ चेस पीस, जो हॉर्स होता है ना चेस में, आपको नाइट दिख रहा है जो चेस में होता है। यस, इट इज अ नाइट, इट्स अ पीस फ्रॉम द चेस बोर्ड। यप, लेकिन नाउ आई विल शो यू द रियलिटी ऑफ दिस। ओके, आई एम गोइंग टू जस्ट जूम आउट। सी, दैट वाज नॉट द चेस पीस, दैट वाज द रिफ्लेक्शन ऑफ चेस पीस। चेस पीस तो यहां रखा है भाई। सी, the real chess piece is here and what you are seeing inside is a reflection of chess piece. ठीक है, chess piece यहां रखा है। I'll focus on the chess piece now. फोकस नहीं हो रहा क्या? या इट फोकस। ठीक है, तो आपको अभी दिख रहा है ना कि हमने पहले जो आपको दिखाया था, मैंने जूम करके, दैट वाज एक्चुअली अ रिफ्लेक्शन। बट आपको क्या लगा? यू थॉट दैट इट वाज अ चेस पीस, लेकिन वो चेस पीस तो था नहीं, इट वाज नॉट अ चेस पीस। इसका क्या मतलब हुआ? समटाइम्स व्हेन वी लुक इन अ मिरर वी विल थिंक दैट द ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड द मिरर। देखो अभी आपको क्या लग रहा है कि ये मिरर के पीछे यहाँ पे चेस पीस रखा हुआ था कहीं पे पीछे, आपको ऐसे ही लगा था ना कि इट वाज अ चेस पीस। So what is this? This is called an image. ठीक है, this is known as an image. I will show you another thing. Wait, let me find a piece. कहाँ गया? तो अभी मुझे आप ये बोलो कि जो यहाँ पे मिरर में आपको पीछे दिख रहा है ना, you see के there is something behind the mirror, right? Is this real? वो असली है क्या? Is that real? Is the chess piece which you can see here, यहाँ पे जो आपको chess piece दिखाई दे रहा है ना, is that chess piece real? मुझे बोलो, is that real or not? This chess piece, is it real? No, right? That is not real. So what do we call such a chess piece? We call the objects which we see in mirror, जो but we cannot put them on any screen, वो screen पे नहीं डाल सकते। Like, do you think I can show this somewhere on, अगर मैं wall पे ऐसे reflect करूंगा तो दिखाई देगा क्या? नहीं देगा ना। बट ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिस पीस इज रिफ्लेक्टिंग इन द मिरर। बट इफ आई शो दिस मिरर ऑन अ वॉल, कैन यू सी अ इमेज ऑफ द चेस पीस ऑन द वॉल? नो, यू कैन नॉट सी दैट। वॉल को हम यहाँ पे स्क्रीन बोलेंगे। सो कैन यू सी द इमेज ऑफ द चेस पीस ऑन एनी स्क्रीन? नो, यू कैन नॉट सी। सो व्हाट डज दैट मेक इट? दैट मीन्स दैट दिस इज नॉट अ रियल थिंग। ये रियल नहीं है। इज इट रियल? नो, दिस इज नॉट रियल, दिस इज virtual। ठीक है, VIRTUAL, this is a virtual image। ठीक है, अभी आपको समझ आया? अच्छा, सेकंड चीज, ये वर्चुअल है, बट लुक एट द साइज ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। मैं भी इसको बिल्कुल साइड बाय साइड रखता हूं। ठीक है, कैन यू सी व्हाट इज द साइज ऑफ दीज थिंग्स? कैन यू सी द साइज? इन दोनों का साइज अलग है क्या कुछ? इज द साइज एनी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? इनका साइज में कुछ डिफरेंस है? नहीं है ना। इसका जितना हाइट है उसका हाइट भी उतना ही है। देखो अगर मैं इसको यहां पे मूव कर रहा हूं ना, साइज चेंज हो रहा है क्या? नहीं चेंज हो रहा है, बस इट इज रोटेटिंग बट द साइज इज सेम। अगर मैं इसको दूर ले जाता हूं तो वो छोटा हो जाता है, बिकॉज इट्स फार अवे। व्हेन आई ब्रिंग इट क्लोजर इट बिकम्स सेम, लाइक बड़ा हो जाता है। बट दिस ऑलवेज शोज के द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट which is being shown in the mirror is same। तो इसका क्या मतलब हुआ? हमने इसे क्या सीखा अभी? जो इमेज होती है, when there is an image formed by a plane mirror, it is erect and same size as the object। okay, erect का मतलब क्या हुआ? I will tell you what erect means। ठीक है, erect का मतलब हुआ, see when I turn this object, यहां पे मैंने रखा है, see the object is kept here। ठीक है, इसका राइट साइड आपको मिरर में दिख रहा है, इसका लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है, वो थोड़ा फ्लिप हो गया। बट इसका जो टॉप है, दैट इज द टॉप इन द इमेज एज वेल, राइट? जो इसका सर है वो ऊपर ही है, और इसका जो बॉटम है, बॉटम ऑफ द चेस पीस
is the bottom in the image as well? Yes or no? है ना? Okay, top of this is on the top, bottom of this in the bottom. Yes or no? So the image is not flipped upside down. ऊपर से नीचे नहीं हुआ है, ऊपर का ऊपर है, नीचे का नीचे है कि नहीं? So this is called erect. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? When the image is like that, जिसका top is top और bottom is bottom, तो उसको हम क्या बोलेंगे? We call it erect. That image is known as erect. देखो मैं यहाँ पे अगर इसको हटा के यहाँ पे रख दूंगा तो probably you will understand better. मैं इसको इतना मूव कर रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ, साइड ऐसे घुमाने के बाद में भी ऊपर का ऊपर ही है और नीचे का नीचे ही है. ठीक है, समझ आया ना आपको? What am I trying to say? उसको हम क्या बोलेंगे? We will call such an image as erect. Understood? ये क्लियर हो गया ना? तो टॉप टॉप रहेगा, बॉटम बॉटम रहेगा, तो उसको हम erect बोलेंगे. और सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. An image formed by a plane mirror is erect and of the same size as the object. True? ये क्लियर हो गया? Is this clear now? ठीक है, अंडरस्टूड, सबको समझ आ गया. नाइस नाइस नाइस, सबको क्लियर है. ठीक है, नाउ आई विल शो यू वन मोर थिंग. अभी हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं. लेट मी जस्ट गेट दीज थिंग्स आउट ऑफ द वे. अभी स्लिट को आई कैन जस्ट मूव, कीप इट अवे. लॉक वन स्लिट को, चेस पीसेस को भी आई विल मूव देम फॉर अ स्मॉल bit of time, and I am going to bring a interesting twist to this experiment now. I think I need to clean the mirror once. Okay, I'll just clean the mirror and I'll switch on the camera as well. So अभी हम experiment कर रहे हैं. Cool, we are doing an experiment again. I am going to switch on the camera. So now you can see that we have everything on a chessboard. Can you see that this is on a chessboard? है कि नहीं? है ना? I'll just keep it on the last box of the chessboard and I'll keep the camera right in front of it. ऐसे थोड़ा दूर रखूंगा so that you can see it. ठीक है ना? अभी आपको दिखाई दे रहा है? Can you see the mirror? अभी आपको मिरर भी क्लियरली दिखाई दे रहा है ना? You can see it. ठीक है, तो now you can see the mirror and you can see the chessboard as well. Now what I am going to do is, देखो अभी मिरर आपको प्रॉपर दिखाई देगा. Out of the way, with this out of the way as well. So what I am doing is, I will take one chess piece. ये मैंने यहाँ पे रखा. You know what a chess piece is, right? देखो मैंने chess का piece लिया है. This is a pawn by the way. I'm keeping it here. ठीक है, ये कितना boxes दूर है? 1, 2 boxes away. This is on the third box. So let's keep it in front of the mirror. So now, even in the mirror, what you can see is that, see यहाँ पे 1 and 2 boxes away. ठीक है, this pawn is on the third box, right? 1 box, 2 box, third box. Similarly, in the mirror, you can see that the pawn is on 1 box, 2 box and third box में pawn रखा हुआ है. Yes or no? रखा हुआ है ना? यहाँ पे जितना distance है इन दोनों के बीच में, even in the mirror, the distance is same. I will just rise this mirror up a little bit so that you can see it in a better way. Let me find a thing on which I can rise the mirror. I have a little small piece of foam. Let's use that. Okay, थोड़ा बड़ा हो गया. This much is fine, I think. ये ठीक है ना? So you can see that if I move this, if I keep it on the second box, even in the mirror it came on the second box. If I move it and keep it on the first box, even in the mirror it moved and it came on the first box. So I move it
सेकेंड बॉक्स पे आ गया, मैंने और पीछे किया, थर्ड बॉक्स पे आ गया, मैंने और पीछे किया तो इट केम ऑन द फोर्थ बॉक्स इन द मिरर। इससे हमें क्या पता चलता है कि व्हेन वी मूव ऑब्जेक्ट्स क्लोजर और farther away in real life, even in the mirror the image moves। जब हम रियल ऑब्जेक्ट जो है, see this is the object right, this is the object and that is the image। ये ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, इसको इमेज बोलेंगे, ठीक है। जो हमको ग्लास में दिख रहा है वी कॉल इट एन ऑब्जेक्ट, जो हमको रियल लाइफ में दिख रहा है वी कॉल इट एन इमेज। आई जस्ट राइट इट, ऑब्जेक्ट रियल होता है जो ये है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। एंड जो मिरर में आपको दिखाई दे रहा है, मिरर में ऑब्जेक्ट का क्या दिखाई देता है, व्हेन ऑब्जेक्ट गोज इन द मिरर व्हाट कम्स आउट इज एन इमेज। ठीक है, ये क्लियर है ना। अरे मैंने ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग गलत लिख दिया है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मिरर में जाता है तो आपको उसका इमेज दिखता है। तो नाउ वी कैन सी के द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज same as the distance which is there inside the like mirror and the image। Cool, I will close this camera and I will show it the proper definition to you। Now we will add this thing। हमने पहले पढ़ा था object is formed an object formed by plane mirror is erect। Is it erect? Yes, ये हमने prove कर दिया। Is the same size as object, this also we have seen। And now we have added one more bit। I will change the color, I'll make it green this time। So what bit did we add at this time? It is at the same distance from the mirror as the object is in front of it। Object यानी जितना दूर होगा ना, see यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि this sharpener which is there is 1 2 3 boxes away। So even तो यहाँ पे क्या है, देखो first of all let us see, we will confirm all these things again। An image formed by a plane mirror is erect। ठीक है, erect है, ये इसका टॉप उसका टॉप सेम है ना, ट्रू, ठीक है। So it is erect, it is same size as the object। इन दोनों का साइज सेम है। मिरर में अंदर जो इमेज है और जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, सी दिस इज द ऑब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट and this is the image। तो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज इक्वल है, यस इक्वल, तो इसको भी टिक मार्क लगा देते हैं। एंड इज इट एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। दोनों में डिस्टेंस सेम है क्या, लेट अस काउंट 1 2 3, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। अंदर देखते हैं 1 2 3, यस इट इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया, great। Now we are going to do another thing। अच्छा, by the way I wanted to tell you one amazing thing। अभी हमने चेस के सारे इतनी सारी चीजें देखी ना। How many of you know how to play chess? आप में से कितने लोगों को चेस अच्छे से खेलने आता है, मुझे बताओ। Let me know in the comments fast। चेस किस किस को खेलने आता है? जिसको चेस खेलना आता है ना, जस्ट टाइप के मुझे आता है, नहीं आता है। और जिसको चेस खेलना नहीं आता है या जिसको अपना गेम और अच्छा बनाना है, what you have to do is अनअकैडमी का एक और चैनल है जो हमने अभी नया स्टार्ट किया है। इट इज कॉल्ड अनअकैडमी चेस, ओके। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पे क्या है, यू विल गेट द चैंपियंस ऑफ द चेस, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट फ्रॉम एवरीवेयर। जितने बड़े बड़े चैंपियंस है ना चेस के, दीज पीपल आर गोइंग टू टीच यू हाउ टू प्ले गुड चेस। चेस अच्छे से कैसे खेलना है आपको सारे चेस के चैंपियंस, grandmasters of the chess will teach you how to do that on the Unacademy chess channel, okay। go and subscribe to that channel as well and you can learn how to play good chess। अच्छे से कैसे खेलना है प्रोफेशनल लेवल पे, आपको वहां पे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे। cool। So someone is asking me to speak in English। I am speaking in English, I am speaking a little bit in Hindi as well। तो मैं दोनों में बोलूंगा। I'll speak in both the languages now। Shamil is saying I am Isha। Hello Isha। Someone is saying you are also okay, nice। Someone said I am like Chandan San। I don't know Chandan San, but
I think it's a compliment if people are comparing me with other sirs. It's a good thing. So let us move on to the next thing. Again we are going to do an experiment this time. Oh, ये क्या हो गया? ऐसा कभी कभी हो जाता है और मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ है, तो I'll just go back. Yeah. So again we are going to do an experiment this time. What I am going to do is, I have a mirror over here. I will switch on the light and I am going to write something on a piece of paper. Now tell me, what should I write? Tell me something. I'm going to write it on a piece of paper. I have a piece of paper here. I'm going to write something on it. Just tell me fast. आप लोग मुझे बोलो. Can people hear me? मेरा voice आ रहा है ना आप सबको? Can you people hear me or not? Someone is saying नहीं आ रहा है. Okay, किसी ने बोला chess लिखना है. I'll write physics. Cool. I'll write physics. Cool. अभी मैं है ना एक पेपर पे, see I have a small piece of paper. यहाँ पे piece of paper है. I am going to write physics on that. Can you see what am I writing? ठीक है, मैंने इसके ऊपर क्या लिखा? I wrote physics on it. अभी what I am going to do is, I am just going to keep it beside the mirror. I'll turn the mirror a little bit. ठीक है, I'll just turn this mirror a little bit. Wait. So I have turned this mirror and I'm going to show what I have written. Can you see what I have written in the mirror? आपको समझ आ रहा है क्या मिरर में क्या लिखा हुआ है? Can you see? No, आपको समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है मिरर में? I'll write something else now. Oh, I have one piece of paper already. See, what I'm going to do is, I'm going to hide what is written on the piece of paper and you have to guess what is written there. Can you guess what is written over there? Pritham is saying मैंने उर्दू लिखा है. I actually know how to write उर्दू, but मैंने उर्दू नहीं लिखा. That was just a reflection. अभी मुझे बोलो कि मिरर में क्या लिखा ही है? Yes, I have written Binod on the mirror. देखो अभी मिरर में बिनोद लिखा हुआ है. इससे हमको क्या पता चला कि see, I will do one thing. मेरे पास हाथ में मैंने फिर से अपना मार्कर ले लिया. राइट साइड कौन सा है मुझे बताओ? Which is the, wait, I will take some support and keep this thing so that it does not fall. I don't want this thing to fall. ठीक है, अभी बिनोद आपको दिख रहा है ना? So which is the right side? ये right side है ना? So when I put a dot on the right side, see, I'm just putting a dot on the right side. You can see कि in the mirror it came on the left side. Mirror में वो left side आ गया, है ना? और अगर मैं left side पे एक dot डालता हूं, तो it came on the right side in the mirror. Yes or no? उल्टा आया ना? मैंने यहाँ पे right पे किया तो mirror में left आ गया. मैंने यहाँ पे जब left पे किया तो mirror पे right पे आ गया. Yes, ऐसे ही हुआ ना? तो this is called lateral inversion. आपको टर्म याद रखने का जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखना कि जब हम कुछ भी चीज मिरर में दिखाते हैं तो हमको राइट का लेफ्ट पे दिखाई देता है और लेफ्ट का आपको राइट पे दिखाई देता है. दिस इज द रीजन वाई जब हम एम्बुलेंस देखते हैं, आपने एम्बुलेंस देखा है कभी? एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है? एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा होता है ना? आई विल जस्ट राइट एम्बुलेंस उल्टा वंस. यू विल सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट देन. So I have written ambulance on a piece of paper. Now see what happens is, जब मैंने ambulance mirror के सामने रखा, तो you can see के mirror में it's written correctly. Mirror में अभी ठीक ठीक लिखा हुआ आ गया, whereas paper पे मैंने उल्टा लिखा है.
यस और नो? तो जब हम लोग बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं तो उसको मिरर लगा होता है, राइट? द कार और द बाइक हैज अ मिरर. तो जो भी चला रहा है, they should be able to read that it's ambulance written on it without turning back. तो वो लोग कैसे देखते हैं? There is a mirror. आपने देखा होगा ना कि ऐसा मिरर लगा होता है. There is a mirror like this. ऐसा एक मिरर होता है ना बाइक को लगा हुआ. तो जब आप इसमें देखोगे कि यहाँ पे क्या लिखा है, तो then you can see कि it is ambulance. Let us see if we can see. एक सेकेंड. ओ यार ये गिर रहा है. कैन यू सी? इसमें एम्बुलेंस प्रॉपरली लिखा हुआ बता रहा है. ठीक है ना? सो दैट इज वाई वी राइट एम्बुलेंस उल्टा. उल्टा लिखते हैं. वी राइट इट फ्लिप. वी राइट इट इन अ इन्वर्टेड मैनर. तो नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई एम्बुलेंस हैज दिस रिटन इन द अदर वे? सो this concept is basically, you have to remember this now, an image formed by a mirror. जब plain mirror से हम एक image बनाते हैं, so the left side of the screen, left side of the object is the right side, seen as the right side in the image, and the right side of the object is seen as the left side in the image. Okay, it appears like that. Okay, is that understood? Is that clear? Should I move on? Is this crystal clear? Yes, आपको समझ आ गया ना? मुझे एक टाइम बता दो. Write down crystal clear and then I will move on to the next topic. Is it clear, everyone? Arsh is saying, sir, I love your teaching. I love you all as well. आप लोग जो डाउट जब पूछते हैं तो मैं उसको भी इसीलिए क्लियर करता हूँ. I really like how आपका क्लास काफी सीरियस है and no one is just doing random comments. ऐसा कुछ नहीं कर रहे. All of you are paying attention and I really like that. So सबको crystal clear हो गया? Nice. So now we will move on to the next thing, that is the Menti quiz. Yup. Now we are going to do what? We are going to do the Menti quiz. Let me quickly open the Menti quiz so that we can start it. Let me find my mouse. So can you see it on the board now? No, you cannot see. You can just give me a small movement, people. Okay, now you will be able to see it on the screen. Okay guys, just stay with me for a moment. One movement, please.
ठीक है, डन डन डन, प्रॉब्लम सॉर्टेड। ठीक है, आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ। अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई देना चाहिए। आर यू एबल टू सी इट ऑन द स्क्रीन? टेल मी फास्ट, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्या? आई हैव स्टार्टेड इट। यप, यू शुड बी एबल टू सी इट ऑन द स्क्रीन नाउ। कैन यू सी इट? कैन यू सी इट? मेंटी आपका कोड है। गो टू www.menti.com, ये वेबसाइट खोलिए अपने फोन में या लैपटॉप पे, आप जहां भी देख रहे हो वहां पे जाके www.menti.com आपको खोलना है, और वहां पे एक कोड का बॉक्स आएगा जहां पे यू हैव टू पुट द कोड 4585845। आई विल शो यू हाउ दिस वर्क्स। ठीक है, just type the code 4585845. Go to menti.com and type 4585845. तो अभी क्लास में कितने लोग हैं? There are around 60 people in the class right now. I want all of you to go open menti.com, menti.com and type the code 4585. Cool? मैं टेक्स्ट लिखूं क्या? I'll show you what the text is. कोड मैं बड़ा लिख देता हूं एक टाइम। 4585845, ठीक है, 4585845। यू कैन सी कि आपको ये कोड एंटर करना है। सो आई विल स्टार्ट लेटिंग यू पीपल इन। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव जॉइंड। आप लोग ऐड हो रहे हैं। ओके, लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग इन। एवरीवन, सबका आइकन मुझे दिख रहा है, सबका आइकन दिखाई दे रहा है। देयर आर 39 पीपल, देयर आर 40 पीपल नाउ। लेट्स सी और कितना होता है। आई वांट 50 people, 50 plus people in the Menti quiz. Okay, there were around 50 people in the class, or was it 60? Yeah, so let's see, let's wait for a couple of minutes so that everyone is able to join the Menti quiz. ठीक है, 51 people. Let's wait, let's wait. We will wait for a couple more minutes so that everyone can come. Okay? Let us see, let us see. I'm just waiting for you all. I'm waiting for you all. आप लोग सब आ जाओ। $58 people. ठीक है, आप लोग सब आ गए। Should I start it now? मेंटी स्टार्ट कर दूं मैं? ठीक है, let me start Menti. So I am starting Menti right now. I'll remove the code from the screen first, वरना आपको ये दिखाई नहीं देगा. So all 60 of you are here, and I am going to start the countdown now, so you can enter the class. So आपको सारे आंसर्स करेक्टली देना है। जो भी ज्यादा आंसर्स करेक्टली देगा और जो जितना जल्दी देगा उसको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। फर्स्ट वन इज सन इज अ लुमिनस ऑब्जेक्ट, ट्रू और फॉल्स, मुझे बताओ। सन इज अ लुमिनस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको काफी टाइम दिया हुआ है। यू कैन टेक ऑल द टाइम यू वांट, बट जो जल्दी आंसर करेगा उसको पॉइंट ज्यादा मिलेंगे। मुझे लास्ट टाइम किसी ने बोला था कि टाइम थोड़ा कम हो रहा है, सो आई हैव इंक्रीज द टाइम लिमिट नाउ. So 3, 2, 1 and time's up. Let us see how many of you have answered correctly. So 61 of you, that is a huge majority,
have given the correct answer. Sun is a luminous object. वो ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट निकलता हो उसे luminous object बोलते हैं. ठीक है, तो सन में से लाइट निकलता है कि नहीं? सन में से लाइट तो निकलता है. So that means sun is a luminous object. Let us have a look at the Menti board now. Okay, जितने 10 के 10 नाम है, all of you scored 1,000 points in this. So all of you are on the top right now. Inam, Mahima, Mayank, Kavya, Devamalia, all of you are there in the top 10. So let us quickly go to the next question. अभी थोड़ा सा questions difficult होना start हो जाएंगे. So you have to type this now. Light travels along a dash line. कैसी लाइन में लाइन travel करती है लाइट? Just type it down. I have given you 1 full minute so that you can type it down easily. Light travels along a what kind of line? Let us see. बस बहुत टाइम है अभी. So the correct answer is straight. Light travels in a straight line. देखो लाइन वहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो some people have written straight line. That is not correct. You just have to write straight. So you have to read the question very, very carefully. Okay? Light travels along a dash line. Light कैसी लाइन में ट्रेवल करता है? वहां पे लाइन ऑलरेडी लिखा था. So you just have to write straight. अगर आप थोड़ा भी ऐसे मिस्टेक करेंगे ना, तो आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे. Because in exam you have to be very careful about this. So let us see who is on the top now. So on the top we have Vartika, who says she is from class 9. Yeah, class 9 में तो let your juniors have fun. You attend the class, but let them have the fun. Please do not, take away their glory. So second one is Priyani Mohanta. That's very nice. Hinam is on the third, and Umang is the fourth champion here. So let us go on to the next chapter. Okay, you are not able to see the Menti. Can you see the Menti now? I'm so sorry. Okay, any polished or a shining surface acts as a dash. अगर surface काफी polished हो या it's very shiny, तो जब light इसके ऊपर आती है तो वो कैसे act करता है? How does it act like? जल्दी से आंसर दो. You have lot of time. You have ample amount of time for this. So Rocking Gamer is telling me that Nabamita ma'am teaches better than me. That is true. Even I like how Nabamita ma'am teaches. Okay, she teaches in an amazing way. Even I am a fan of Nabamita ma'am. So let us see. Any polished or shining surface acts as a what? 3, 2, 1 and the time is up. अभी मुझे बता दो. Let's see आप लोगों ने क्या आंसर किया है. So you people have answered a lot of things. The correct answer is mirror. जब भी कोई surface shiny होता है और polished होता है, तो it acts like a mirror. It is a reflector, but it acts like a mirror. ये मैंने आपको sentence पढ़ाया था. So luminous object नहीं हो जाता यार, reflect करता है वो. Okay? So let us have a look at the Menti board. So Kanish Kesara is saying, sir, you teach best. Thank you very much for the compliment. You are also the best students which I have had. So Umang, who is on the top again, Devamalia is second, Vartika is third, and on the fourth place we have Kanishk. Sir, you teach great. Oh, thank you. But Kanishk, you people try to keep your names as it is so that I can call you out easily. Okay? Now we'll go to the next question. An image formed by a plane mirror is at dash distance from the mirror as the object is in front of it. Again, you have a lot of time. मैंने बहुत ज़्यादा time दिया हुआ है. For every question I have given a lot of time. But if all of you answer by the
अगर सबने आंसर कर दिया तो ये टाइम लिमिट ऑटोमेटिकली चला जाएगा. ओके, सो ट्राई टू आंसर फास्ट. Cool. We should not have to wait for 1 whole minute because this is just a multiple choice questions. तो कितना डिस्टेंस पे दिखता है ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था. इमेज की प्रॉपर्टीज में आपको मैंने ये समझाया था. ओके, yeah, this is an MCQ only. I have added MCQ now. So you have time now. 6, 5, 4, 3, 2, 1. और अभी देखते हैं कि आप लोगों ने क्या आंसर किया है. Cool. So 57 of you have given the correct answer. An image formed by a plane mirror is at the same distance from the mirror as the object is in front of it. Image जो होगा वो same distance पे होगा. ये मैंने वीडियो में आपको अच्छे से एक्सपेरिमेंट भी करके बताया है. So now we have on the top we have, let's see who do we have on the top. Okay, we have Umang again, Devamalia is second, Vartika is again third and Kanishk is on the fourth place. तो अभी देखते हैं आगे बढ़ के क्या होता है. Okay, image formed by a plane mirror is, इसमें आपको टाइम लगेगा थोड़ा, जल्दी से देख के बताना. मैंने थोड़ा सा टाइम इसमें रिड्यूस कर दिया. Tell me. Virtual behind the mirror and enlarged, virtual behind the mirror and of the same size as the object, real at the surface of the mirror and enlarged, real behind the mirror and of the same size as the object. ये चार ऑप्शंस में से आपको चूज करना है. The timer is ticking. Let us see आप लोगों में से कितने लोग इसका करेक्ट आंसर करते हैं. 3, 2, 1 and the time is up. Let us see what people have answered. So 38 of you have answered correctly. So जो दूसरे लोग हैं probably आप लोगों ने क्लास में उतना attention नहीं दिया जितना देना चाहिए था. So अभी देख लो, जो इमेज होता है it is virtual, it is not real. वो इमेज को आप देख सकते हो क्या? Can you put that image on a screen या आपको वो वॉल पे डाल के देख सकते हो क्या इमेज जो आपको मिरर में दिख रहा है? No, it is not real. It is virtual. Okay, and it is behind the mirror और उसका size is also same as the real object. Let us see कि अभी लीडर बोर्ड में कौन आगे है कौन पीछे है. So right now we have Vartika is back at the first position. At second position we have Aditya Arya and at third position we have Kanishk. And fourth position पे there is a new player now. Sneha is on the fourth position. Fourth position पे Sneha आ गई है. So let us see next question क्या है. यार प्लीज डू नॉट स्पैम द कमेंट सेक्शन. ओके, स्पैम मत करो. एक टाइम टाइप कर दो, आई विल रीड इट. कूल. सो दिस टाइम यू हैव टू राइट डाउन द टेक्स्ट फ्रॉम द इमेज. आप देखो इमेज में आपको क्या दिख रहा है. इट्स इज अ मिरर इमेज ऑफ द टेक्स्ट एंड यू हैव टू राइट दिस डाउन एज द प्रॉपर टेक्स्ट. कूल. अगर आप लोगों को fill in the blanks टाइप पसंद नहीं आ रहा है ज्यादा, if you people want only MCQ, from next class onwards I will have only MCQ, but I thought fill in the blanks would be more fun as well क्योंकि इसमें I can ask you a more variety of questions. Cool. Just let me know about that and attempt the answer. तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि fill in the blanks टाइप करने में ज्यादा टाइम लग रहा है या मुश्किल हो रही है एंड आप लोगों को सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चाहिए तो मुझे बता दो. मैं आपको नेक्स्ट टाइम से आई विल आस्क मोस्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देन. कूल. So some of you are saying fill in the blanks are also very nice. So I think I will ask very few fill in the blanks questions. Mostly I will ask MCQ questions. मैं ज्यादा MCQ पूछूंगा. Fill in the blanks I will reduce them. मैं थोड़ा कम पूछ लूंगा. ठीक है ना? I think that would be fine. तो उसमें I will have a proper balance between fill in the blanks and MCQ questions. Cool. So अभी टाइम हो रहा है 5, 4, 3, 2, 1 and the time is up. Let us see how many of you answered this correctly. The correct answer is Unacademy and a lot of you gave a lot of answers which are not correct. इसीलिए कुछ someone wrote ambulance. यार ambulance कैसे होगा?
ठीक है, द करेक्ट आंसर वाज अनअकैडमी. जस्ट राइट अनअकैडमी एक टाइम मिरर में रख के देखो तो कैसा लगेगा आपको. थिंक ऑफ इट इन दैट वे, ठीक है ना. आप मिरर में कभी लिख के देखो, राइट समथिंग ऑन द पेपर and watch it on the mirror and you will understand what was the question exactly and how it works. अगर आप ऐसा देखोगे तो आपको easily next time solve करना बहुत आसान हो जाएगा. So this time again on the top we have Vartika and Sneha came all the way from 4th to she came to 2nd. Mahima also came from like she was way lower than 4th and she also came 3rd. Rudra Shah is also on the 4th position now and on the 5th position we have Asmita. These are all new names. I like it. You people are, you know, competing very nicely. So let us see. Next question. What kind of reflection takes place on a mirror? Mirror पे किस टाइप का रिफ्लेक्शन होता है? Regular or diffused? Okay, I think ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आना चाहिए था, बट अभी आ गया है तो just see. Three, 2, 1 and let us see the answers. Time is up. Regular reflection takes place on the mirror. That is very correct. I am proud of you people. You people put up your minds and thought about it. That it is a regular reflection which takes place on the mirrors. So let us have a look at the leaderboard. Tanmay, Vartika, Sneha, Mahima, all of you, like सबको अच्छा points आया. So if you answer a bit faster, right, you will get more points. Remember that. So for us today, the topper is Vartika, who claims to be from class 9. So I'm not going to congratulate Vartika, but ठीक है, she is the topper for today. अगर आप लोग का सेम क्लास में से होता तो I would have congratulated Vartika, but everyone else you did a great and amazing job. Even Vartika did a good job. But this test were very easy for her क्योंकि मैंने आज सुबह में 8th क्लास को भी पढ़ाया है, 9th क्लास तो ये बहुत पहले पढ़ा हुआ है. So that is there. But congratulations everyone. सबने आज बहुत अच्छा किया है. Most of you did very well in the class. If you see even like top 10 में there is not much difference in the points, so that is good. And Vartika got 6,847. उसके बाद में second is Rudra, who got 6,763. So congratulations Rudra, congratulations Asmita and Sneha. And जो सबसे bottom है we have Roha Mariam, we have the Enchanted Knowledge, we have Isha, we have Mahima, we have Sneha, we have Umang. So congratulations all of you, you came in the top 10. So that is all for today. आज के chapter में इतना ही था. So yeah. That's all for today. Thank you for attending the class, and if you liked how I am teaching, go and subscribe. Go and subscribe if you like the video. I'm trying to remove this Menti. Yeah. So if you like this, thank you very much for coming to the class. Thank you very much for coming to Unacademy. मेरा क्लास अगर आपको पसंद आया है, if you like my video, go and hit the like button. वहाँ पे जो लाल बटन है उसको दबाइए. वहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होगा. वहाँ पे एक बेल आइकन होगा. इन सारों को आप है ना वहाँ पे एक मर्तबा क्लिक करिए उनके ऊपर. And not just this, if you have any friends, if you have classmates who are not coming to this class, यार ऐसे भी आपके फ्रेंड्स है क्या जो यहाँ पे Unacademy पे नहीं आते? Ask all of them to come and join this because we are going to take Menti quizzes. We are going to do a lot of fun experiments. We are going to, and this is not just for class 7th, okay? We have this for class 6th, we have it for class 7, we have this for class 8, फिर 9, 10th, 11, 12 में तो है ही. So anyone who is from class 6th and more can join Unacademy. हमने सबके अलग-अलग channels बनाए हुए हैं. So that's all for today. See you. I liked interacting with you. I hope you like my teaching as well. Bye bye and good night. Good night everyone.